Hello students, welcome back. I'm with you to discuss a type of essay. In my last video, we discussed an essay in which you you had to give your opinion. Another important type of essay is discussion essay. There are five type of essays. We have already discussed one type, and in this video we will discuss discussion type of essay. We will discuss step by step, every step, what to write, where to write, and why to write. So before we proceed, I would like to tell you that in discussion type of essays, there are two sides of the same topic. Some says that it should be done, but others say that contrary, the opposite should be done. So how we should deal, and what is the right or appropriate way of writing this essay to get 7 or more than 7 in this one. Okay, so the question is, some parents believe that learning mathematics at school is redundant and should not be taught. So this is one view. Some parents say that mathematics at school is not compulsory at all, useless, and should not be taught. What is the other side? While others believe that it should remain a fundamental subject, a compulsory subject, a basic subject, whether or not it is used in their later life. This is the second view, कि चाहे ये बाद वाली जिंदगी में यूज हो ना हो, but it should be a compulsory subject at school. So these are the two views. First view is up to this point, and the second view is this one. What is the question? Discuss both views. दोनों व्यूज को डिस्कस कीजिए एंड गिव योर ओपिनियन, और अपना ओपिनियन दीजिए. व्हाट डू यू थिंक? Means it should be taught according to you, or it should not be taught. So first of all, let's divide the one. Yes, this is the first side, and while others believe that it should remain a fundamental subject, whether or not it should be used in their later life. Discuss both views. दोनों व्यूज को डिस्कस कीजिए एंड गिव योर ओपिनियन, और अपना ओपिनियन दीजिए. Okay, so first step is introduction. First step is introduction. So what is the blueprint of introduction? The very first one is
paraphrase the journal statement. This is the first one. What you have to do, you have to paraphrase, you have to rewrite the journal statement which is given, and then you have to give your thesis statement. Thesis statement. One more thing can be added. I just want you to relook at it. The first one, give a journal statement. Journal statement. Second one is paraphrase the specific statement, and the third one is give the thesis statement. I hope you are familiar with these three terms. ये जो तीन टर्म हैं, उम्मीद है कि आपको इनके बारे में पता होगा. नहीं पता, वी विल डिस्कस देम ब्रीफली. इनको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. GS journal statement could be a statement which is linked with the question, जो क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है, जो से मिलती जुलती है. One line or two line could be written. And second one is paraphrase the specific statement. The statement which is given, इसको paraphrase कर दीजिए. Paraphrase means you write the same thing but in different words or different sentence structures. And last one is the thesis statement. Thesis statement, you tell the examiner, you tell the reader what is your planning. What do you intend to write in the rest of the essay? So let's move on to the first part, that is introduction. Okay, students. So let's move to introduction, and we will discuss the three parts of introduction. This is the introduction. It is of 54 words. Whether or not to teach mathematics at school is a controversial issue. This is the background statement. This is the journal statement. Whether or not to teach the mathematics at school is a controversial issue. मतलब ये एक controversial issue है कि मैथ को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए. So this is a line which could be a fixed line. इस तरह के ऐसे में ये लाइन एक फिक्स लाइन हो सकती है. कैसे? किसी भी स्टेटमेंट को इसी स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, like some people think that the boys and girls should be taught in separate schools, but others say that they should be taught in the same school, co-ed schools. So we can write this: whether or not to teach
the boys and girls in the same school is a controversial issue कि लड़के और लड़कियों को एक ही स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं is a controversial issue. So it means that the same lines could be the same pattern, not the same line. एक ही लाइन नहीं, सेम पैटर्न यूज किया जा सकता है डिस्कशन टाइप के क्वेश्चन में. Okay, so up to this is the background statement. And learn this statement and mold this statement according to any question, and it can be molded. Next one is paraphrase the given statement. So several parents are of the view, बहुत सारे पेरेंट्स इस विचार के हैं that learning mathematics is of no use. Learning mathematics is of no use. के उसको सीखने का कोई फायदा नहीं है. And here is the same thing that learning mathematics at school is redundant and should not be taught. So it is the paraphrasing of this one up to this point. इस point तक पहले फर्स्ट व्यू की पैराफ्रेजिंग है. सेकंड, अदर्स ओपाइन, और जो दूसरे लोग हैं वो क्या कहते हैं, दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, कि ये मैथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है. एंड मस्ट बी टॉट, और जरूर पढ़ाया जाना चाहिए. सो दिस इज द पैराफ्रेजिंग ऑफ सेकेंड साइड. ये दूसरी साइड की पैराफ्रेजिंग है. सो यू हैव टू राइट द सेम थिंग. यू मे यूज डिफरेंट vocabulary, different sentence structures, and last, that is thesis statement. This essay intends to discuss both the viewpoints in detail, followed by my opinion. So here I would like to remind you one thing. मैं आपको एक चीज साफ साफ बता दूं कि you have to give your opinion if it is asked. आपने अपना ओपिनियन देना है अगर ये पूछा गया है, और अगर ये नहीं पूछा गया है, समटाइम द क्वेश्चन सेज डिस्कस बोथ व्यूज. कई बार सिर्फ इतना लिखा होता है कि डिस्कस बोथ व्यूज, मतलब दोनों व्यूज को डिस्कस कीजिए, and your opinion is not asked. So in that case you are not supposed to give your opinion, but in this one it has been asked, so we will say followed by my opinion. So thesis statement tells the reader, tell the examiner. जो thesis statement है वो एग्जामिनर को आपकी पूरी प्लानिंग के बारे में बता देगी कि आपने करना क्या है. इसमें लिखा है कि पहले मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करूंगा और फिर अपना ओपिनियन दूंगा. ओके, आई होप द इंट्रोडक्शन इज क्वाइट क्लियर टू यू, एंड लेट्स मूव ऑन टू BP1 body paragraph 1. Okay, so second paragraph, BP2. This is the blueprint of paragraph 2. Paragraph 2 का blueprint ये है. Main point which you have to discuss, the side 1, पहले वो लिख दीजिए. Second, give the reasons for that. फिर उसके रीजंस दे दीजिए. रीजन कुड बी वन, उसका एक रीजन हो सकता है, दो हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं. एंड देन एट द एंड गिव योर एग्जाम्पल टू प्रूव योर पॉइंट.
So first one is the main point. What is the main point? The main point is that some parents think that mathematics skills are no longer required. So this is the first. There are a growing number of parents, increasing number of parents who believe that mathematics should be removed as a school subject. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इस मैथमेटिक्स को स्कूल सब्जेक्ट के रूप में उसको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ वी आर गिविंग द रीजंस फॉर दैट. उसका रीजन बिकॉज it has become irrelevant in the contemporary world. Irrelevant जो relevant नहीं है in the contemporary world. Contemporary means in the modern times, कि आज के टाइम में ये irrelevant है, ये important नहीं है. They have a reason to believe, क्योंकि उनके पास एक रीजन है ऐसा बिलीव करने के लिए कि इसकी जरूरत नहीं है. What is that? That mathematical skills are no longer required. Mathematics skills जैसे ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, these are mathematical skills are no longer required as human skill. Human skill के रूप में इनकी जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि because मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आज के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कैन डू इट फॉर ह्यूमन बींग्स. क्योंकि ये काम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट द्वारा इंसानों के लिए किया जा सकता है, किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द थर्ड पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गिविंग द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एडिशन, सिंपल जोड़ना, टू सब्सट्रैक्शन माइनस करना, एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, और जो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं, काम है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कैन बी डन बाय कंप्यूटर्स. उनको कंप्यूटर्स द्वारा किया जा सकता है. सो ह्यूमन बींग्स, they need not do anything. They need not learn computer. Why? Because computers, calculators can do this job for us. So we need not learn. So this was the first side. Now we are going to move to side 2. Second side. What is the second side? That it should remain a fundamental subject. पर दूसरे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि इसको फंडामेंटल सब्जेक्ट रहना चाहिए, इसको हटाना नहीं है. ओके, सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट द पैटर्न वुड बी द सेम. उसका पैटर्न भी सेम रहेगा. मेन पॉइंट, पहले जैसे इसका मेन पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा कि हटा देना चाहिए, उसमें कि रख लेना चाहिए. सेकेंड, फिर वो देंगे उसके रीजंस, एंड फिर उसका एग्जाम्पल्स. सो लेट्स मूव ऑन टू BP2 बॉडी पैराग्राफ 2. ओके, सो लेट्स मूव टू BP2 बॉडी पैराग्राफ 2. सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, and as we discussed, the pattern would be the same. Pattern of BP1 and BP2 would be the same. First is main point. What is the main point? But before main point, you can use the word on the contrary. On the contrary. On the flip side. On the other hand. Conversely. So these are the words which you can use. Before introducing the second, other segment of parents opine, think or argue. जो other segment है, जो दूसरा ग्रुप है पेरेंट्स का, वो क्या ओपाइन करता है? That it is a fundamental part of learning. ये लर्निंग का एक
फंडामेंटल पार्ट है, वेरी बेसिक पार्ट है सीखने का। irrespective of its utility, irrespective of its utility, इसकी यूटिलिटी को अगर हम नजरअंदाज कर दें कि यूज होगा नहीं होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी बेसिक, ये बहुत बेसिक है। बिकॉज दिस इज द सेकेंड वन, रीजंस। रीजंस इसका जो कहा है उसका रीजन क्या, बिकॉज इट डेवलप्स द रीजनिंग पावर ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन की रीजनिंग पावर को डेवलप करता है, एंड अदर कॉग्निटिव स्किल्स, दिमाग की दूसरी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करता है। इट मेक्स द ब्रेन शार्पर, शार्पर, ये दिमाग को तेज करता है। फॉर इंस्टांस, नाउ इट इज द थर्ड पार्ट। फॉर इंस्टांस, दो कंप्यूटर्स कैन डू द कैलकुलेशंस फॉर ह्यूमंस, चाहे कंप्यूटर्स ह्यूमंस के लिए कैलकुलेशंस कर सकते हैं, येट फिर भी नोइंग, जानना एडिशन कि जोड़ना कैसे है, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर आवर इसेंशियल डेली स्किल्स, ये हमारी रोजमर्रा की स्किल्स हैं विच वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ, विच मेक लाइफ इजियर, जो हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाते हैं। And last wind up, due to this is कारण पेरेंट्स थिंक दैट, पेरेंट्स सोचते हैं मैथमेटिक्स इज क्वाइट नेसेसरी, कि मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। सो दिस इज द सेकेंड साइड। So we have discussed three: introduction, BP1. In BP1 we discussed side 1. In BP2 we discussed the second opinion, and now we are going to give the conclusion. So let's move to last part of the essay. Okay, so conclusion. There are certain phrases which could be used at the beginning of conclusion, like conclusively, to conclude, in conclusion, to wind up, in nutshell. So all these are the terms which can be used here. So and after discussion के बाद, it is evident, it is clear. What is clear? That both sides have their own valid arguments, कि दोनों के अपने अपने वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, तर्क हैं, जो ये कहते हैं कि इसको हटा देना चाहिए और जो ये कहते हैं कि इसको पढ़ाया जाना चाहिए। दे हैव देयर, बट आई फॉर्मली बिलीव, नाउ इट इज योर ओपिनियन, यहां से आपका ओपिनियन है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहते हैं। बट आई फॉर्मली बिलीव दैट मैथमेटिक्स मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द स्कूल सिलेबस, कि जो मैथमेटिक्स है वो स्कूल सिलेबस का एक हिस्सा रहना चाहिए, एज इट इज वाइटल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इज ए एवरीडे स्किल, और रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली स्किल है। So this is like conclusively, after discussion, both sides have their own arguments. This could be a fixed line. This could be used in almost every essay of this type, discussion type. And then, yes, but I firmly believe ये भी लिखी जा सकती है. Then you have to give your own conclusion, own reason. Sorry. I hope that this video will help you to write the
discussion essay in a better way. So thank you for watching this video, and don't forget to give it a thumbs up if you like the content, and also subscribe this channel if you are new to this. So because we keep on making new videos on these topics which are really very important. So thank you. Bye. See you later in the next video.